हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फाइलम कोएलेंटेरेटा के अंतर्गत ऑरेलिया पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं ऑरेलिया। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन ध्यान से देख लीजिए। फाइलम कोएलेंटेरेटा, क्लास इसका स्काइफोजोआ, ऑर्डर इसका सेमियोस्टोमी, जीनस क्या है ऑरेलिया और स्पीसीज क्या है ऑरिटा। अच्छा, इसका अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। The genus Aurelia is found throughout the most of the world oceans. The species Aurelia aurita is found along the eastern Atlantic coast of North Europe and the western Atlantic coast of North America in New England and eastern Canada. And next point जो दे रखा है हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो देखिए ऑरेलिया ऑरिटा इज आल्सो नोन एज मून जेली और जेलीफिश। ऑरेलिया ऑरिटा को मून जेली के नाम से या जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इट इज फाउंड इन वार्म एंड टेम्परेट सी all over the world. It is an inshore genus found either floating with water currents or freely swimming by the contraction movement of its bill. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है? इट इज द कार्निवोरस। ये कैसे होते हैं? ये कार्निवोरस होते हैं एंड फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स with the help of its oral arms. Next point क्या है? It is response to the various stimuli and it is most active and diffuses light. नेक्स्ट अगर हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखिए जेलीफिश इज नॉट अ ट्रू फिश। दिस इज important. It is called jellyfish due to its jelly-like structures and its floating habitat. इसको हम लोग ट्रू फिश नहीं कहते हैं और ये जेलीफिश क्योंकि इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर और इसमें फ्लोटिंग हैबिटेट देखने को मिलता है लाइक फिशेस। अच्छा, इनके शेप और साइज की अगर हम बात करें तो ऑरेलिया कैसे होते हैं? इट्स सॉफ्ट अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी। कैसा होता है इनका बॉडी? अम्ब्रेला शेप्ड होता है विद द 4 रेड पर्पल एंड हॉर्स शू शेप्ड गोनेट्स। दिस लाइन इज अंडरलाइंड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में गोनेट्स का नंबर पूछा जाता है तो गोनेट्स के जो नंबर होते हैं वो 4 होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है तो हॉर्स शू शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है on its upper surface and 4 long and narrow oral lobes hanging downwards from the lower surface. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इनमें क्या दे रखा है? इट हैज अ कॉन्केव एबोरल और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस एंड अ कॉन्केव ओरल और सब अम्ब्रेलर सरफेस। यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे ऊपर कैसे है? अम्ब्रेलर सरफेस है। यहाँ पर गोनेड्स की संख्या देखिए 1 2 3 4 और कैसे घोड़े के नाल जैसा स्ट्रक्चर है गोनेड्स की। और साइड्स में जो मार्जिनल लैपेट्स हैं, मार्जिनल टेंटिकल्स यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हैं और यहाँ पर रेडियल कैनाल्स
और ओलर आर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है और इन्हीं को हम लोग ऑरेलिया या मून जेली या जेली फिश के नाम से जानते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, गोनेड्स की संख्या और गोनेड्स का शेप एंड साइज, ये बात याद रखेंगे। द बॉडी ऑफ ऑरेलिया स्पीसीज इज इट ट्रांसपेरेंट। कैसे होता है बॉडी इनका? ट्रांसपेरेंट होता है एंड ब्लूइश व्हाइट इन कलर। अच्छा, माउथ है ना, अगर ओरल आर्म की बात करें तो द सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेलर सरफेस bears a short and inconspicuous manubrium. At the distal end of the manubrium is situated in the square mouth. As well as इसमें और क्या पॉइंट में दे रखा है देखिए, and the form the each corner of the square mouth long tapering field and delicate process called oral arms hang downwards. These arms have a ciliated grooves which lead into the mouth. Also, the edge of the groove consists of the pneumatocyst. ये क्या होते हैं? pneumatocyst से consisted रहते हैं। The radii along with which the oral arms like are per radii. Midway between the two per radii and interradius is present, and finally between each per radius and interradius and a radius is present. अच्छा, सब जेनाइटल अगर पीट्स की बात करें तो देखिए, सब जेनाइटल पीट्स each of the interradius bears a circular aperture on the subumbellar surface, which leads into a small cavity called the subgenital pits. Now discuss the gonads. Just above the genital pits, horseshoe-shaped gonads are present. The gonads are red or purple in color. कैसे होते हैं? रेड होते हैं या पर्पल में होते हैं। The free arms of all gonads are direct toward the center of the umbrella. There is no connection between the genital pits and the gonads. नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गोनेड्स के बाद है लैपेट्स। So lappet, the circular margin of the umbrella is broken into 8 lobes by 8 notches. Each of notches has two delicate leaf-like process called as the marginal lappets. Next, between these lappets, a small secretory organs is present called tentaculocyst or rhopalium. This is very most important point. The marginal tentacles between the notch or free edge of the umbrella is surrounded by the row of the numerous small delicate thread-like structures called marginal tentacles. So these tentacles have a batteries of the pneumatocyst. So now next point, valerium. So the marginal of the sub-umbrellar surface bearing the lappets and the tentacles from thin flexible flap called valerium. The valerium in Aurelia do not have a gastrodermal canals running into it, so it is called pseudovelum. This is most important point. Achha, next, the medusa from which such a pseudovelum is called acraspedot. It means that differs from the velum of the obelia, which has the gastrodermal canals running into at the called crepsodate. The velum of the obelia is true velum. This is important point. The medusas from which true velum called crepsodot medusa.
So now discuss about the life cycle of the Aurelia structure. अगर देखें तो Aurelia is the dioecious species. कैसे होते हैं ये dioecious होते हैं. Male and female sexes are separate but there is no sexual dimorphism. Testes and ovaries are the similar in appearance. The medusa form has four horseshoe-shaped gonads on the floor of the stomach. The gonads are red or purple in color. The free arm of all the gonads are directed toward the center of the umbrella. Next point, the gonads are clearly visible through the semi-transparent body of the jellyfish. If you enjoy this class, so please subscribe and like my channel and connect it to A to Z Biology. Next, on maturity, ova and sperm break into the gastrovascular cavity and pass out the mouth with the outgoing of water of current. These eggs and sperms are loaded in the frills of the oral arm. फर्टिलाइजेशन अगर देखा जाए सो फर्टिलाइजेशन क्या है द स्पर्मेटोजोआ आफ्टर being the release from the body through the outgoing water current swim about till it reach the ova. While next the ova are fertilized in the stomachs of the female or also in the oral arms. Thus the fertilization in Aurelia is said to be a internal और एक्सटर्नल बात. अगर हम देखें तो ऑरेलिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन. फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनुला लार्वा. Fertilization of the after fertilization the formation of planula larva. The frill of the oral arms serve for the temporary brooding. In these fields of zygote undergoes the early development and from the ciliated larval stage is called planula larva. This is important point. And the zygote undergoes the holoblastic division. This is important point to produce the solid ball like a morula. नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया and this is a male medusa and this is a female medusa. The sperm, they are sperm released and ovums are presented here. और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट्स एंड आफ्टर जाइगोट बाय सेल डिवीजन से इसमें टू सेल स्टेजेस फिर 4 सेल स्टेजेस के बाद ब्लास्टुला फिर ब्लास्टुला के बाद फिर स्विंग प्लेनुला लार्वा. सो देयर आर मेनी स्टेजेस फॉर्म्स द यंग स्काइफोस्टोमा. और अंत में क्या होता है यहाँ पर एडल्ट स्ट्रोबिला के बाद ही जाके फ्री जो होता है इफाइरा का फॉर्मेशन होता है. अच्छा नेक्स्ट आगे देखिए क्या दिया है द टू लेयर्ड गैस्टुला is developed by the invagination. The gastrula has the inner endoderm and outer ectoderm. This is important point. So the blastospore of the gastrula is not a completely closed. The embryo now elongates and its outer cell becomes ciliated and finally the blastospore closed. This ciliated larva is called planula larva. This is important point. So next the formation of the scyphostoma. Next देखिए the ciliated planula larva after the short free swimming existence attach itself to the substratum by its
aboral end. After the attachment, the cilia of larva are lost and the mouth open at the oral end. The larva now elongates and get the metamorph into a small trumpet-shaped polyp. The tentacles develop around the mouth. Mouth Mouth become a square in outline and its edges become elongated from the short manubrium. Now the larva look like a trumpet-shaped hydra and called the hydra tuba or young scyphostoma. Important point noted with scyphostoma feeds and grow in size and survives in these stages for the several months. It is also so the budding and the birds eventually the separate from the parents. And last is the formation of the ephyra and ephyrae or the formation of the ephyrae from the cyphostoma is called the process of the strobulations. So what is the strobulation? The strobulations, the formation of the ephyrae from the cyphostoma is called the process of the strobulation. And in autumn and in winter, the cyphostoma undergoes the strobulations. The cyphostoma is the distally develops a series of the ring-like transverse constrictions. These constrictions gradually deepen and the organism now the resembles a piles of the minute discs placed one above other. At these stages, the cyphistoma with the segmented body is called a strobili, and each of the segment is called the ephyra larva. This is important point. The ephyrae are connected with one another by the muscular strand. And as the ephyrae grow, the muscular strand break at the intervals and the ephyrae are the pinched off one by one. These pinched ephyrae swim away a little jellyfish. This is important point. And when is abundant and the temperature is low, several ephyrae are released at the time is called the polydisc strobulation. This is important point noted with. Whereas when the food is limited and the temperature is high, only a single ephyra is released at the time. This is called as the monodisc strobulation. So what do you understand what is the difference between the polydisc strobulations and monodisc strobulation? And this is the very most important point. So notate it. So formation of the next ephyra. Ephyra, a newly released ephyra is the microscopic and the gelatinous creatures. This creature has a well-developed tetramerous symmetrical. कैसे होते हैं टेट्रामेरस होता है. The edge of its umbrella body has 8 bifid lobes separated by the 8 deep radial indentations of the clefts. The distal end of each lobe are deeply notched to form the pair of the lappets which are the sensory in nature. The space between the two lappets has the short tentacles, which is the future tentaculocyst. Ephyra also process the manubrium and the four-edged mouths. Ephyra swim actively in the seawater and feed on small organisms like protozoans.
So the lappets help in the catching the prey and transferring the prey to the mouth. So next point is the formation of the metamorphosis. What is the terms of metamorphosis? So metamorphosis as the growth proceeds, a mesoglea increases enormously and the two layer of the endoderms fuse to the form the solid gastrodermal lamella except in the regions of the gastrovascular canals with the appearance of the numerous marginal tentacles and four oral arm ephyra is finally transformed into the adult Aurelia. मतलब क्या है कि एक इफाइरा लार्वा से ऑरेलिया क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है ऑरेलिया में, और इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. So today's class very useful for to you. If you enjoy this class, so please subscribe and like my channels. I connected to A to Z Biology. Thank you.